it's a very important initiative, and I think other states should also learn from this initiative of knowledge sharing among the teachers, of sharing of innovations, and it's very important to have such initiatives where sharing is not just between the teachers but also with other resource persons. अब जैसे मैं खुद एक डेवलपमेंट सेक्टर या एनजीओ बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, तो हमारा काम टीचर्स के साथ रहता है, स्कूल्स के साथ रहता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to have these sharing sessions. So congratulations first of all. मेरा जो आज का presentation है, it is on a topic which I feel is very important, the role of youth and students in achieving the goals of education. जैसा हम सभी अपने प्रोफेशनल करियर में यंग लोगों के साथ डील करते हैं, एंड इट इज समथिंग व्हिच इज very important, because what actions we take today as teachers is essentially shaping the future, the outcomes of not just education but kaise hamari country grow karegi, what will be the health of the country, population, what will be the income of the population, what how we as citizens will grow, and how will we forward uh, the the positive values of our communities and our countries. So it is always an understatement about the important role of teachers, because you are working with the young people. So my I have a short presentation, but what I would also request all of you is to participate in certain activities and certain questions which I'll have during the presentation. तो मैं आपसे request करूंगा कि chat पे, आप में से जो लोग Zoom में join कर रहे हैं, आप अगर chat पे you can share your ideas and responses to certain questions I'll have. So I am now sharing my screen. I hope it is visible. Manveer sir, ma'am, if Yes, this it's is visible. visible. Yes, sir, it's visible, sir. Okay, thank you. So, so as ma'am introduced, I am Mashood. I am basically associated with an initiative called Global Dream, which aims at ensuring that every child and adult are able to have the basic skills of reading, writing, and numeracy. And this, of course, is something which is generally done in the primary education section. But as we know, the challenges of foundational literacy numeracy are very large. And even though all of us are from the secondary schools teaching secondary grades, but ये challenge हमें भी as such face करना पड़ता होगा when we see that many children, even after graduating elementary school, are still not able to have the foundational skills. So I want to focus on my presentation on while youth have a lot of roles, but specifically ये जो लर्निंग का क्राइसिस है इंडिया में और कई और डेवलपिंग कंट्रीज में, इसमें यूथ हमारे कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, इज गोइंग टू बी माय फोकस. सो टू स्टार्ट विद, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. आप में से ये इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को यू माइट बी अवेयर ऑफ व्हिच सर्वे इट इज टेकन फ्रॉम. पहला क्वेश्चन मेरा है कि ये एक सिंपल टेक्स्ट है ग्रेड 2 का. What percentage of grade 5 children in rural government schools cannot read this simple grade 2 text in their mother tongue? और अब कुछ आपके सामने यहाँ ऑप्शंस हैं, 34%, 44% and 54%. Oh, I'd like to correct myself. What percent of grade 5 children can read this simple grade 2 text in their mother tongue? तो हमें कुछ रेस्पॉन्सेज आ रहे हैं. सो मिस्टर सुरेश कुमार फ्रॉम GMS Pindi Charkan Kalan is saying 54%. Some are saying 44%. Humaira Nazir is saying 44. Maya Rajji is saying 34, 55. Okay, so we are getting several responses. But तीनों अगर आप options देखें तो it is still very shockingly it is a very shocking number कि इतने सारे बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं
grade 5 में आके भी grade 2 का text, right? And the correct answer for our information is 44%, uh, which means that nearly 56% of rural government school children in India are not being able to read grade 2 text. Now, it is a big challenge, and we know post-COVID, this has become an even more challenging situation. In fact, जब COVID शुरू होने से पहले, we had a situation where national education policy had said कि 50 million, or which is again a very large number, almost 5 crore children in primary education are not getting the foundational literacy numeracy skills. और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने ये भी बोला है कि post COVID 92% of primary government school children might have lost certain skills in foundational literacy, and 82% might have lost in foundational numeracy. Now, these numbers, we all of us are aware of it, and it is a huge challenge. अभी एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे इंडिया में रहे हैं, उन्होंने प्रीवियसली ये भी कहा था कि लगभग 150 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, एंड पोस्ट कोविड अगेन ये नंबर is at risk of increasing. And finally, if we talk about, what is the long term outcome of this crisis, India may already 37% of the world's illiterate population is residing in India, right? That is 287 million adults. Or we know that जब कोई person foundationally literate नहीं है, तो उनको उनके livelihood में, banking में, ATM से पैसा निकालने में, वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने में, ऑनलाइन कोई हेल्थ ऐप में अपना नाम रखने के लिए, हर चीज में उनको बाधा आती है, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. Now, the question which I would like to put forward in front of you is, can doctors solve the COVID-19 pandemic alone? Right? जब भी कोई बहुत बड़ी problem होती है, for example, the pandemic, do we really expect कि doctors जो है COVID-19 को अकेले solve कर पाएंगे, right? Or what about the role of people? What about the role of everyone doing social distancing? What about hand wash? What about wearing masks, right? So it's not that जब भी कोई बड़ी problem होती है तो केवल जो specialists होते हैं उन्हीं पे सारा जो responsibility वो रखी जाती है, जैसे हमें pandemic ने बताया कि सबको इसमें contribute करना चाहिए. So similarly, when we talk of the learning crisis, क्या ये teachers की responsibility alone पड़ती है, right? Can the teachers solve this challenge alone? इस पे मैं चाहूंगा कि आपके जो थॉट्स हैं, जो सजेशंस है, इफ यू कुड आल्सो शेयर दैट इन द चैट. डू यू फील दैट ये जो हमारा लर्निंग क्राइसिस है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत एम्फोसिस अब दिया है, डू यू थिंक टीचर्स अलोन कैन सॉल्व दिस? एंड इफ नॉट टीचर्स अलोन, देन हु एल्स can contribute? If you'd like to share your thoughts. So I think many of the teachers are saying that no, teachers alone cannot, they are not the only people who are responsible for solving it. I think contribution of society, Atika Sharma ji is saying society needs to contribute. Yes, that's absolutely true, Atika ji. Parents in society has to contribute. Teachers, parent in society, right? So I think everyone most of us would agree that teachers alone cannot, they're not alone responsible for solving this major challenge. Okay, next question for all of us. What % of population in India is in the age group of 15 to 24 years approximately? हमारी जो youth population in India is generally considered, a very young country as compared to China and other countries. So any guesses on how many, what percentage of population approximately is in the youth population, grade 8 and above? So you have three options: 20%, 30%, and 40%. Okay, so we have started getting again a lot of responses. I think maximum people are saying 30 to or 40%. Someone is saying 77%. That is a very large number, but
sometimes people say that you have to be young from heart and not from your age. Okay, so 30 and 40 ये दो ज़्यादा ऑप्शन आ रहे हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज one. 20% of India's population is in this category. Now that is actually a very huge number because हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं इससे भी यंग एज में वो स्कूल्स में हैं. सो इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री, राइट? एंड वो एक तरीके से वो चाहे हमारा JNK का रीजन हो या पूरे इंडिया में हो, ये हमारा डेमोग्राफिक ऐसा है जिसको एक तरीके से हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरह इसको बताया गया है कि अगर हम अपने यूथ को एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड देंगे तो इंडिया एक्चुअली एक बहुत वर्ल्ड लीडर बन सकता है इन ऑन ऑल एस्पेक्ट्स. तो बट द चैलेंज स्टिल रिमेन्स कि अगर हमारे देश में इतना चैलेंज है इलिटरेसी का, तो is it also possible कि ये जो हमारे youth population है, so if we look at this number again, 229 million. Now, if we have 229 million youth, and actually this number is very similar to the whole illiterate population in India. So हमारा census में बताया जाता है 74% is literate. So uska 1/4 of a population which would be again something around 250 million or 260 million. Uh, Actually, if every youth is able to take care of one illiterate learner in the country, India can actually become literate. तो यहाँ पे कुछ ऐसे young leaders और students से मिलाना चाहता हूँ who have taken it as their mission to make at least one of the learners literate, right? So let's meet some of these youth leaders. जी, आप ऑडियो सुन पा रहे हैं मैम? Yes, audible, audible. It is audible. Okay, okay, thank you. कितनी मैचेस हैं? और ये वाली 5. मुझे इसमें से 5 सेब निकाल के दो. अच्छा, अब ये बताओ इसमें से 5 कौन सा है? And we use the method, the 3S of teaching. It is Saval, Samay and Sambandh. Saval means we ask the learner questions so that they can pick up the things at their own pace. The second is Samay, we give them plenty of time. And the third is Sambandh, we keep a friendly relationship with the children. We believe in moving from known to the unknown. ये क्या है? बतख. अच्छा, और बतख जब बोलती है बतख, तो बतख की पहली आवाज क्या आती है? अच्छा, और ये क्या है? सपेरा. अच्छा, और जब बोलती है सपेरा, तो सबसे पहली आवाज क्या आती है? When we follow the FLN, that is foundational literacy and numeracy. In this, we follow the reverse method of teaching. That is, instead of teaching them, making them mug up ब से बतख और अ से अनार,
Sir, it is not audible, sir. Right now, it's not audible. Okay. Now is it, ma'am? Yes, sir, it's audible now. Okay. चल चल अब घर चल अब घर तक चल अब बस पर चल ये क्या है सकेरा So it was a very nice experience. We have a special bond, and you know, like when you look at him, you can say that yeah, I taught this boy. So you know, you get that very nice feeling from inside. I had in total taught 9 of them, along with the help of my cousin and her friend. So, but initially I taught 2 of them. Then they brought all their friends together. So I would really like to motivate others. Because she wants to study, but she cannot because of some financial problems. I taught servant in our school. I'm a boarder. I look forward to do it as it is a responsibility of every Indian citizen to teach an illiterate child. Literacy is the only power we have, and without literacy, our world is nothing. Because literacy can only revamp anything or ameliorate the condition of India presently. ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सो ये कुछ हमारे बच्चे हैं जो लखनऊ में हमारा जो प्रोग्राम चलता है उसमें दे हैड पार्टिसिपेटेड और 2014 से ग्लोबल ड्रीम में हमारा एक्सपेरिमेंट यही था कि कैन यू नो स्कूल चिल्ड्रन डू दे हैव द मोटिवेशन टू टीच समवन एल्स यू नो क्योंकि बच्चे भी जो हैं दे आर मोस्टली यू नो फोकस्ड ऑन their own studies, they are looking at examination, उनको you know जैसे marks की आजकल बहुत चिंता रहती है. All these things are very important, but we were wanting to experiment कि क्या to teach someone can number one, are children motivated to do it? Secondly, what do they gain from it, right? It is not just about giving but gaining also. तो एक सवाल जो मैं आप सभी से ये पूछना चाहता था, मैं चाहूंगा अगेन चैट पे आप शेयर करें एंड ऑफ कोर्स यू आर द बेस्ट पीपल टू आंसर इट बिकॉज यू आर टीचर्स की इफ चिल्ड्रन टीच what are some of the benefits that children themselves can get? but जो बच्चे खुद पढ़ाते हैं, अगर वो पढ़ाते हैं, besides teaching, what else benefits in the process of teaching can these children gain? अगर आप if anyone would like to share on chat, for example. अच्छा, I think some people are raising their hand, so should we keep the question answer, sir, at the end, or we can unmute also if possible? It all depends on you, how you want. If you want to keep it in. Okay. Okay, so we'll maybe take one question. So you can raise your hand जो इस question का जवाब देना चाहते हैं कि young people if they teach, तो उससे बच्चों को the people who are teaching उनको क्या benefit मिलेगा? So we have got one Jyotsana ma'am, I think. हाँ, so I am unmuting Jyotsana madam. Oh, sorry. Yes, ma'am, can you please unmute and share your thought? Good afternoon to everyone. I think when these students teach other younger ones, their concepts get more clear. Right. That's absolutely right. That
उनका खुद का जो conceptual clarity है, that becomes very clear. Thank you, ma'am, for sharing that thought. We have another Renuka Sharma ji. So, Renuka ma'am, if you would like to unmute and share your thought. Hello, sir. Sir, I would like to add, if children or young people are allowed to teach other younger students, they can have education in between, they can overcome their prejudices, they can feel more confident, and they have more friendly atmosphere. And yes, they can clear their doubts even more better. They overcome the shyness that some people suffer. If they hesitate to ask teachers or anybody else, then in their age group, they can clear their doubts even more better way. Thank you. Right. Thank you. Thank you so much, ma'am. Very, very good points. That like ma'am also said earlier that I think Jyotsna ma'am had said that ek to conceptually they are able to strengthen their own knowledge, but it is also about the socio-emotional thing. It is about confidence, right? So ये जो आपने कुछ बच्चों के videos देखे थे, इनसे जब हमने ये पूछा कि आपने किसी को जो आपने वॉलंटियरिंग प्रोग्राम में पार्ट लिया है, क्या किस लिए लिया, बिकॉज many of the things are actions are motivational just because of incentive कि मैंने किसी को पढ़ाया तो सर्टिफिकेट मिला, but many of the children actually said that जब उन्होंने किसी को पढ़ाया, so they learned more than they taught actually. For example, they learned about hardships. Many of the children, for example, adopted a learner who had never been to school. वो बहुत गरीब फैमिली से आ रहे थे, तो they learned about hardships. Some of the children, the young people who taught, they said कि we learned about patience, and which of course is great for us as teachers, because हमें always ये लगता है कि हमारे students को patience, but they always test our patience. So it's many children actually said कि now we appreciate our teachers more, because we have now learned कि how much patience they keep while teaching us. So these are some of the real benefits when we talk about life skills or socio-emotional development. Actually, teaching someone literacy is one of the best ways to develop the life skills among our students, right? I think there are some. Is there anyone else who has? I think Mr. Bilal Ahmed Sheikh would like to say something. Yes, Bilal ji, would you like to go ahead? यस सर, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है इससे, और लीडरशिप क्वालिटीज भी. जी बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज, that's something which is so very important. और यहाँ पे केवल टीचिंग लर्निंग के साथ साथ उनको और भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्पेशली एडल्ट जो इलिटरेट लर्नर्स हैं, यू माइट हैव सीन दिस कि कई लोग जो एडल्ट बन जाते हैं, देन दे आर लाइक क्या पढ़ लिख के क्या फायदा, अब तो हम अपना मतलब जिंदगी भी जी लिए, हमारे बच्चे भी हो गए हैं, अब वो उनकी पढ़ाई पे आप फोकस कीजिए, आप हमारी लिटरेसी पे क्यों फोकस कर रहे हैं. तो ऐसी जो थॉट प्रोसेस भी होती है, हमारे यंग वॉलंटियर्स को उसको कैसे एड्रेस करें, उनको कैसे उनकी इंडिविजुअल जो कंसर्न्स है उसको कैसे एड्रेस करें, कैसे उनके साथ फिर मिलकर कोलैबोरेट करें. कई बार स्पेशली एडल्ट लर्नर्स के साथ हमने ये देखा है कि वो बहुत बिजी रहते हैं, उनका दिहाड़ी का काम होता है कई लोगों का जो इलिटरेट होते हैं, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड टाइम. तो किस तरीके से हमारे जो यंग स्टूडेंट वॉलंटियर्स उन्होंने दे मोटिवेटेड देयर लर्नर्स, दे आस्क्ड देम कि आप थोड़ा टाइम निकालो, 15 मिनट निकालो. This is something which we have tried to do, and so far we have had nearly 500,000, nearly 5 lakh children of grades 8 to 11 who have participated in our Teach at least one program. 2014 से program चल रहा है, और and we are very happy to, I'm very happy to share कि इसमें बच्चों का जो खुद का social सर्विस की तरफ जो उनका माइंड है, ऐसा नहीं है कि वो सभी सोशल वर्कर बने हैं, बट चाहे वो साइंस में गए हैं या मैनेजमेंट में गए हैं या फिर बिजनेस में गए हैं, हमने उनसे 10 साल बाद भी बात की आफ्टर दे टॉट यूजिंग दिस कैंपेन, एंड दे
always remembered this as the most special thing, and उनका हमेशा डायरेक्शन ही ऐसा बन गया है कि नहीं, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे अपने कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, जितने भी मैं अपने कैपेसिटी में कर पाऊँ, but it is actually the most hands-on experience to build the life skills and social emotional development and even the moral values that we as teachers are developing. I would like to go back to my presentation. I'm sorry, I know many people want to share more thoughts, but isko hum, once I complete my presentation quickly, then we'll open up the floor for um, just a moment. Yes. So, so the question, and again, thank you so much for your very active participation. What is the government policy talking about is also something which we are now aware of with national education policy. जो एक बहुत बड़ा पहल चला है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन का भी, निपुण भारत मिशन, एज वी आर कमिंग टू नो अबाउट इट नाउ. ऑफ कोर्स उसका जो टारगेट यही है कि ग्रेड 3 लेवल तक जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं वो हम अगले 5 साल में अचीव करेंगे. बट द पॉलिसी ऑल्सो वेरी क्लियरली सेज दैट एवरी लिटरेट मेंबर ऑफ द कम्युनिटी should commit to teaching one student or person how to read. और ये हमारे जो प्रीवियस प्रेसिडेंट रहे हैं मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने भी यही कई साल पहले बोला था दैट every literate student should teach at least 10 more learners who are not literate. और पॉलिसी में फिर ये भी चीज बताई गई है कि कई इनोवेटिव मॉडल जैसे पेयर ट्यूटरिंग, वॉलंटियर एक्टिविटीज, रीडिंग प्रोग्राम्स, इस तरीके से हम यंग लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं. मोर रिसेंटली हमारे एक एडल्ट लिटरेसी जो नेशनल एक मिशन रहता था, साक्षर भारत प्रोग्राम, तो अब उसको पढ़ना लिखना अभियान इन अ मोर टारगेटेड वे किया गया है. उसमें भी देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ फोकस ऑन young people, young collectives like NSS and Nehru Yuva Kendras and NCC. इन सबको का एक important role बताया गया है, right? And all these organizations are very important. But if we really want to see a day where our whole state and our whole country is in a situation where maximum people can read and write and do simple maths, then it really needs a people's movement. It needs a lot many more people getting involved. So now one question is in our mind कि ये तो बहुत ambitious goal है, right? India में we are seeing that so many children cannot read and write, so many adults are not literate. How do we do this? Has it been done before? Is it possible to do this? We have many examples from around the world where it has been done, where 100% literacy has been achieved in a very short time period. And how was it done? It was through the youth, right? So यहाँ पे right पे आप एक photo देख सकते हैं. Could any one of you guess which country are these young women from? And these are, in fact, I'll share a bit more about the background of this particular movement, but can you just guess? So it's one of these countries. यहाँ आप left पे देख सकते हैं Cuba, Nicaragua, Tanzania, Ethiopia, South Korea, Vietnam. Ernakulam is in Kerala. Would anyone like to guess which country? And this country is often considered as an example where, when we are talking about large-scale literacy campaign, this country has been looked at as, a very good example. So any guesses on this? Okay, so we are getting Cuba as one of the responses. Okay, Tanzania, Vietnam. So the correct answer is actually, as Shabnam ji is also saying, it is Cuba. And Cuba was one country where, just a moment. Okay, yes, Cuba was, now if we look at this table, Cuba in 1961, they had, Cuba is, of course, it's a very small country, right? It might be as big as JNK only. So India's comparison might not be fair, but if we just look at what they did in 1961, they had something around 979,000 illiterate people.
एक साल और कुछ महीनों के अंदर ही they made something like more than 75% of their illiterate population literate, right? उनकी literacy rate shifted from 77 to 96. And the main reason behind this was all the secondary school children, grades 8, 9, 10, 11, 12, and college students, उनको 6 महीने की छुट्टी दी गई थी, where they had to go and teach in the rural areas जहाँ पे illiteracy ज़्यादा थी. Right now, of course, that was possible because वहाँ जो बिल्कुल top level जो government है, उन्होंने इसको एक पूरा national mission बनाया था, and then they gave those holidays to the volunteers to go and teach. But it was possible, you know, एक छोटे time period के अंदर एक country को पूरा literate बनाया गया. And actually, if you see Cuba की literacy rate is 77% that time, which is near to India's literacy rate 74%, right? उसी तरह और भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, निकारागुआ, तंजानिया, इथियोपिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, जहां बहुत सारे यंग लोगों ने लोगों को एक लर्नर, 2 लर्नर, 3 लर्नर को लिटरेट बना के पूरे देश को बहुत कम टाइम में, 50 साल में नहीं, 5 साल में भी नहीं, 2 सालों में लिटरेट बनाया है. And if you look in our own country, India, for example, in Ernakulam, which is the first district in India to become literate, एक साल के अंदर again we had a major jump. So my point is that when young people get involved in literacy, that is when a lot of change can happen. Right. Okay, so I would like to now just share what is very important ingredient for youth to really take action on education, and especially again on a very specific thing on literacy. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी हमारे यूथ के पास जो टूल्स हो या जो उनका इंस्ट्रूमेंट हो जिसके साथ वो जाएंगे किसी को पढ़ाने के लिए, इट हैज़ टू बी समथिंग विच इज़ वेरी फास्ट, which is very effective and enjoyable, right? Because अगर हम स्कूल सिस्टम की बात करें तो स्कूल सिस्टम में हमारे टेक्स्ट बुक्स होते हैं, वर्क बुक्स होते हैं, टीचर मैनुअल्स होते हैं. सो देयर इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम एंड वी हैव a lot of people, a lot of time which can be invested in education. But अगर हम adults की बात करें, right, अगर हम adult population की बात करें, it becomes very difficult for them to find time, right? ये बहुत ही मुश्किल रहता है कि आप if there's a person who works खेत में काम कर रहे हैं, या or if there's someone who is even working at home, टाइम इज की कमी हमेशा रहती है. तो हमारा जो अप्रोच रहा है, वी हैव मेड दिस एक्सपेरिमेंटल बुक, दीज थ्री वेरी थिन बुकलेट्स, which I'll also share उसका लिंक on our website as well. कुछ 25 या 30 पेजेस की बुक में हम फाउंडेशनल लिटरेसी को पूरा कवर कर रहे हैं. इसका ये मतलब है कि एक महीने में, in 1 month, we can help a learner who has been illiterate the whole of their life to read a newspaper in 1 month. And we have done this in many of the communities that we are working with in Uttar Pradesh and in other parts of the country as well. तो इसमें हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है इस अप्रोच में, which we call the global dream approach, is known to unknown learners, especially if we talk about people who can speak the language, right? जैसे कई लर्नर होते हैं जो अपनी भाषा बोल सकते हैं, राइट, उनको अपनी जबान आती है, उनको बस पढ़ना नहीं आता, राइट, वो स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाते हैं. तो पर कोई स्क्रिप्ट ना पढ़ने की वजह से पीछे क्यों रहे, राइट? तो हम उनको स्क्रिप्ट में कैसे वो स्क्रिप्ट को डिकोड करके फ्लुएंटली रीड कर सकते हैं और अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए हमारा ये अप्रोच रहता है. नाउ द अप्रोच इज अगेन वेरी सिंपल, एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर मोर आपके साथ ऑन डिटेल्स एट द एंड ऑफ इट. इसमें हम बच्चों से पूछते हैं या एडल्ट से पूछते हैं कि ये किसकी हिंदी में फॉर एग्जांपल उनको पता है कि ये बतख है, ये सांप है, ये पतंग है, रस्सी है, अनार है, राइट? उसी तरह उर्दू या कोई भी ऐसी लैंग्वेज में, इसको हमने 15 लैंग्वेजेस में किया है, तो वो पिक्चर्स देते हैं उनको विच दे नो हाउ टू स्पीक. देन वी आस्क द लर्नर कि ये क्या है, राइट? तो लर्नर सेज बतख है. देन वी आस्क देम, अच्छा बतख है, ओके, तो बतख की पहली आवाज क्या है, पहली साउंड क्या है, पहला स्वर क्या है? So the learner then has to think, right? The phonological awareness हम जिसको कहते हैं कि sound, words are made of sounds, right? So they have to think from their mind that okay, the first sound of batak is b,
or batak is made of 3 sounds, ka, and then we ask them, okay, first sound bataiye. Again, we ask them, not tell them, right? So there's a lot of thinking time which is given to the learner. Then the learner says ki, okay, batak ki pehli awaaz ba, to sound catch kar liya. Then similarly we ask them, okay, very good, to ye kya hai? Sapera. Acha, sapera ki pehli awaaz kya hai? Sa. So the learner then connects the sounds ba, sa together and forms a new meaningful word called bus, right? So while in our systems we do use, like in schools also, and many other organizations, they use pictures and letters and all, but हम उसको introduce करने का तरीका थोड़ा उल्टा कर रहे हैं, right? We are not starting with ब से बतख, we are not starting with writing ब many times and then learning it, but we are asking from known pictures, right? And then we are asking them first sound, और फिर sounds को combine करके एक नया word बना रहे हैं, right? And this is the formula which we use in all languages, be it Hindi, English, Urdu, and all the 15 languages that we have made it in. And then we then give certain practice words. So basically they quickly combine, they use the same letters जो इन्होंने एक lesson में सीखा है, और उसको बिना picture support के they learn it, right? So I'll share the links with all of you as well on the chat, and you can, whenever you have time, you can see the materials, but more importantly you can also share with your students and give them this opportunity to gift someone the lifetime gift of literacy, right? Because हम ये कह रहे हैं कि 1 या 2 महीने में इस methodology से पढ़ाने में someone can read a newspaper, and just imagine कि अगर आपके student किसी को lifetime gift of literacy देते हैं, तो उनमें कितना confidence, उनका कितना सोशल इमोशनल डेवलपमेंट और कितना लाइफ टाइम उनका एक मेमोरी रहेगा कि मैंने किसी को एक लाइफ टाइम गिफ्ट दिया है. So I think with that I would like to now move towards the conclusion, and I have एक मैंने आपको एक glimpse दिया है कि young लोग जो हैं वो खुद की एजुकेशन के साथ साथ दूसरों की एजुकेशन, दूसरों को एक लाइफ टाइम गिफ्ट साक्षरता का, लिटरेसी का कैसे दे सकते हैं. और इसके बारे में अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी थॉट्स हैं, मैं अपना जो नाम, कॉन्टैक्ट, ये सब है, ये भी मैं अभी स्लाइड पे डाल के अभी स्क्रीन पे शेयर कर लूंगा. तो इफ एनीवन हैज एनी if you want to reach out, if you want to learn more about how can we as teachers motivate our children, agar aap unko ye resources dena chahte hain, again all of this is on the website for free, so everyone's most welcome to use this. And I think if there are any questions or any thoughts, or we have some hands raised, so I'll just go one by one. So Ram Kumar ji hain, राम कुमार जी, हाँ राम कुमार जी, आप अनम्यूट करना चाहेंगे और अपना आपका जो थॉट है वो प्लीज शेयर कीजिए. हो गया सर? जी हम आपको सुन पा रहे हैं. हाँ जी सर, बताइए. So you please carry on. He's not in a Okay, position to. Sure. We'll now request Pooja Abrol madam to please ask her to share her thoughts, please. आपने I think hand raise किया था. जी. Good morning to all. Sir, first of all, I would like to thank you for taking this program in this webinar. It's a very good initiative for attaining 100% literacy. In my opinion, Each One Teach One is a very good program by which we can involve our youth for making others literate. और मुझे लगता है कि अगर हम घर से ही ये प्रोग्राम शुरू करें, एज इट इज, जैसे मेरे घर में एक वर्कर आता है
एंड ही इज नॉट एबल टू रीड न्यूज़पेपर, जैसे अभी आपने बताया। तो मैंने आपका प्रोग्राम सुना, तो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उसे इस काबिल बनाऊं कि ही एबल टू रीड न्यूज़पेपर आफ्टर 1 or 2 month। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और मैं ये कहना चाहूंगी कि यूथ जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे उनमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। दूसरा, देयर एटीट्यूड, उनमें जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, टू डू समथिंग फॉर द नेशन, फॉर द वेलबिंग ऑफ द नेशन, वो डेवलप होगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा उनमें। और हमारा यूथ वैसे ही काफी अच्छा है। अगर मैं अपने बच्चों को देखूं तो मेरी बेटी ने ईच वन टीच वन प्रोग्राम तब किया था जब ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ती थी। तो ये बच्चे जाते थे स्लम एरियाज में, तो हर बच्चे को एक बच्चा दिया जाता था, तो उस बच्चे को रेगुलरली पढ़ाना था, बेसिक फाउंडेशन लिटरेसी। तो मैं आपको बताऊंगी, इसने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली, क्योंकि वो प्रोग्राम ने इसमें एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया। तो ये कहती थी, मम्मा आई वोंट टेक लीव बिकॉज आई हैव टू टीच समवन, समवन इज वेटिंग फॉर मी। तो एक अच्छा एटीट्यूड, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। तो डेफिनेटली। और रहा मेरा बीइंग अ टीचर एजुकेटर, being I'll always try my level best to do something for the betterment of the nation। और NPE पॉलिसी 2020 एजुकेशन की लेक्चरर हूँ, तो इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो ऐसा है ड्रीम कम ट्रू, बिकॉज मैंने इसे थोरोली स्टडी किया है, और मुझे लगता है कि इट्स अ बिग चैलेंज फॉर ऑल द एजुकेटर्स to make this policy a big success। So I'll do whatever I can able to do, sir। Thank you। Have a Thank nice you, day। ma'am. Thank you so much. It's so very nice कि आप इस पे काम कर रहे हैं, and so congratulations to your daughter कि उन्होंने ये इस each teach at least one प्रोग्राम में किया है। हाँ, And 21 दिन। यहाँ पे मैं बस मैम की पॉइंट पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमें मतलब हमारा भी यही कोशिश रहे कि जो भी हम बच्चों को लिए जो हमने मटेरियल्स दिए हैं या बुक्स दिए हैं वो बहुत ही थिन हो, ताकि साइकोलॉजिकली ना तो वॉलंटियर जो कर रहे हैं और ना ही लर्नर को ऐसा लगना चाहिए कि बहुत ही ये तो बहुत मुश्किल काम आ गया है कि इसमें हर रोज मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगना पड़ेगा। तो आई वुड हाईली एनकरेज कि आप जो आपकी डॉटर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके जो उनको है उनको आप जो लिंक मैं शेयर करूंगा उसके थ्रू भी आप उनको रिसोर्सेज दिखाएं, क्योंकि दोज आर वेरी 20 पेज बुक्स, राइट। तो और हर दिन केवल 20 मिनट या 15 मिनट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। एग्जैक्टली। जी। सर तो एक्चुअली हमने बीएड में और एमएड में यही सब मैथडोलॉजी ऑफ टीचिंग ही पढ़ी है, कि हाउ टू टीच डिफरेंट स्टूडेंट एट डिफरेंट लेवल। जैसे प्राइमरी वालों को कैसे पढ़ाया जाता है, सेकेंडरी वालों को, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाया जाता है। तो जितने भी मुझे लगता है बीएड और हमारा यूथ है, यंग बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, तो वो तो वैसे ही बड़े अवेयर हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन देयर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो they are much better than we people, but we also become mentor for them, उनको guide करेंगे, direct करेंगे, so that we'll able to achieve this target। So definitely the day will come when we attain 100% literacy for our nation, hopefully। Yes, ma'am. Thank you. And with that optimistic thought, we carry it forward with this vision that one day we will have a community where all children and adults can read and have the basic skills. So thank you so much, ma'am, for your thoughts. And I'll also bring in some more people. So we have Mr. Rampal Thapa ji, who I would like would I would request to please share रामपाल जी, अगर आप अपने थॉट शेयर करना चाहें प्लीज। रामपाल जी, आप कैन यू हियर मी? ओके, सो वी विल ओ अच्छा, इनको आस्क टू अनम्यूट करना। ओके, ओके, वी हैव वन मोर पर्सन, उनका नाम यहाँ मैं पढ़ नहीं पा रहा।
Okay, we have someone from. अच्छा, उनका नाम actually Android लिखा है, तो I'm sure आपका नाम Android नहीं है, पर अगर आप आपका hand raised है, पर mic नहीं कर पा रहा. Okay, so any other teacher who would like to ask something or say something, you can please raise your hands. We'll try to get your thoughts, please. Okay, we have Miss I think Kavish ji hain. Kavish ji, Kavish Sadotra. अच्छा, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Kavish Sadotra ji, आप I think he is not connected with Zoom. Okay. No issues. ओके, तो मैं आप सबके साथ अपना जो कांटेक्ट है और कुछ लिंक्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था. तो so basically, if you would like to learn more about the about this, how to give children more opportunities, young students more opportunities to teach, so globaldream.guru is the website. It has all our teaching learning materials also. वो मैं आपको उसका page अभी दिखाऊंगा. And please feel free to drop an email to me. It is mashood@dignityeducation.org, or if you want, you can WhatsApp me also on this number. And so if you have any ideas, or if you would like to maybe start even a small campaign in your village or in your city or just in your school, and you would like कि कैसे बच्चों को हम motivate करें उसके बारे में, so we will be very happy to do some kind of a Zoom call, something like this, with some of the children and with some of the volunteers, right? So ये हमने हमारा इसमें काफी 6-7 साल से this is something which is our strength of getting young people to take care of literacy. So feel free to drop me a WhatsApp, or you can email also. And ये मैं आपके साथ चैट पे शेयर कर लेता हूँ. अच्छा, I think right. So so Manveer sir, any other is there anyone else who would like to ask anything? Then I think you can conclude, sir. Yeah, we will conclude now. Okay, thank you, Bhatt sir, for this informative session. You throw light on a very burning topic, and I hope all those who have participated in this session will really enjoy the fruits of imparting learning to other masses. So with this word, I really thankful to all of you for sparing few minutes from your precious time. On behalf of JK Knowledge Network, once again, thanks all, and we'll meet very soon with a new session. Thank you.